Hi grade 5th. Today I am starting chapter number 23rd, writing. In this chapter I am not going to take all the topics related to the chapter, but I'll try to cover as many topics as possible. In my priority there are two things which I should complete, that is formal or official letter, and one more thing, that is list making, right? I will try to cover all the topics, but these two topics are going to come in our exam, so I'll take this first, and later if I'll get the time after before examinations or after examinations, I'll try to complete all the topics again. So today I'm starting with informal and personal letter and formal letters. I'm going to tell you the difference between both the letters. This difference will help you to write your letter very effectively. Why we have to write these letters? I'll give you the reasons, and what are the different things that are similar in both the letters and that are different in both the letters. So this will be easy to make you understand that how to write the letters and why you should write these letters differently. Okay, so here I have given you the marks distribution for formal letters. This will be of 10 marks. So I have given mark distribution according to my pattern. Okay, and I give you marks in this way. So it will be easy for you to identify where you can score marks, right? So I'm starting with the difference first. Informal or personal letters, we write these letters to maybe our relatives, maybe our friends, cousins, whoever the person who are near and dear ones to us, right? And formal or official letter, we write to that person, to the officers, to the officials, maybe the person who are actually we don't know them, but it's our obligation to write the letter. If we want to complain anything to any concerned department, maybe PGVCL or maybe telephone department, maybe even our school officers, right? Even any government offices. If you want to write the letters, we have to follow this pattern to write a letter, because these are formal letters, right? In informal letters, what we have to do is we have to write words very effectively. We can use loving way of explanations. Then, for example, if I'm writing a letter to grandparents, then I can tell I'm missing you, I'm loving you, everything. But if you're writing formal letters, you cannot use this type of words. So this is the second difference between them. Third, I'll tell you the similarities. That see here, in informal letters, sender's address also we are writing. In formal letter, we have to write sender's name as well as address. In this, you can skip your name. You don't have to write. This is not the formal letters. This is not the official letter. So you don't have to write name in this. But in formal letter, it is compulsory to write your name as well as address. So this is one of the difference. The date is the similar point in both the letters. Now, in formal letters, we have to write the address of that person to whom we are writing the letter. For example, in this it is written Mr. T.V. Thomas, manager, Vijayanagar Gas Company. Okay, so this letter is written to the gas company. In this
if you know the name of that person, concerned person you are writing the letter, then you can write the name. Else you can write to the person, or to the manager, or the person. See this here, manager is written, so this letter we are writing to the manager. So if we know the name, we can write their names. If we don't know the names, we can write manager. Okay, then again we have to write the address of the receiver, that is to whom we are writing the letter. Now body of the letter and body of the letter is same in this. Before that, salutation is compulsory. In salutations, in this we have to write the name of the person to whom we are writing the letter. Maybe it can be your cousin, it can be your friend, it can be your grandparents, uncle, aunt, to whoever you are writing the letter, you can write their names along with dear. In this, maybe you should be very precise enough to write dear sir or madam. Here I know this is Mr. T.M. Thomas, so I am writing dear sir. But if the concerned person, maybe the manager or someone is female, then you should write dear madam. You should not write name in this. Okay. Now one more difference is there, that in formal letters we have to write the subject. We have to write the subject. This letter is in regards to what? For example, official letters we generally write for some complaints or some attitude or gratitudes towards anything. For example, this letter is written for the complaint about gas leakage, right? So the subject should be smaller and precise enough to give the idea of the letter. Why you should get the idea of the letter? So the person who is checking your letter, who is reading your letter, they can segregate the letters to different departments. For example, जैसे कि इफ आई वांट टू से दिस, अभी जैसे ये गैस एजेंसी की बात हो रही है, तो गैस एजेंसी के साथ साथ इसमें तो गैस लीकेज की कंप्लेन है, लेकिन ऐसी ही बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं इन विच वी हैव टू सेग्रीगेट द लेटर्स. जैसे हमारी अगर जैसे ये गैस लीकेज की कंप्लेन है, वैसे किसी को कनेक्शन चाहिए होगा तो उन्होंने लेटर लिखा होगा, फॉर्मल लेटर रिक्वेस्टिंग फॉर द न्यू कनेक्शन और रिक्वेस्टिंग फॉर द सेकेंड पॉइंट ऑफ गैस लाइन और रिक्वेस्टिंग फॉर द गीजर पाइपलाइन, राइट. तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हमारे लेटर्स भी उसी हिसाब से अलग अलग होते हैं. सो इन दिस व्हाट वी हैव टू, व्हाई शुड बी सब्जेक्ट शुड बी प्रिसाइज, बिकॉज अगर सब्जेक्ट प्रिसाइज होगा तो ये सब्जेक्ट पढ़ के दे डोंट हैव टू रीड द बॉडी ऑफ द लेटर फुल, दे कैन रीड द सब्जेक्ट एंड दे कैन फॉरवर्ड दैट लेटर टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट. जो भी ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, दिस इज वेरी ह्यूज. ऐसा नहीं है कि रोज की बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है, रोज की बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, तो वो लोग हर लेटर पढ़ने नहीं बैठ सकते. सो व्हाट दे हैव टू डू इज, वो लोग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स में लेटर्स भेज देते हैं, राइट. और उसके साथ उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है. तो अगर हमने सब्जेक्ट्स शॉर्ट में और क्लियरली लिखा होगा तो हमारा मैसेज जिनको हम पहुंचाना चाहते हैं उनके तक इजीली पहुंच जाएगा. और उसी के साथ बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर में क्या आएगा, जैसे यहाँ पे सेंडर हमारे ऋतु पटेल हैं, तो और उनका लेटर है कंप्लेनिंग अबाउट गैस लीकेज, ठीक है. तो बॉडी ऑफ द लेटर में क्या आ सकता है, बॉडी ऑफ द लेटर में आ सकता है जैसे डियर सर आ गया, सब्जेक्ट कंप्लेन अबाउट द गैस लीकेज. सर, I want to complain about the gas leakage in my area.
एरिया आप लिखोगे ताकि समझ में आ जाए। आप गैस लीकेज बता सकते हो कि प्रॉपरली आपके घर में गैस लीकेज हो रहा है या आपके एरिया में गैस लीकेज हो रहा है। इफ इट इज फॉर द होमली रीजन, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे घर में गैस लीकेज जैसा लग रहा है, तो आप उस वे में लेटर लिखेंगे, जैसे सर देयर इज गैस लीकेज इन माय होम, सो काइंडली चेक एंड रिवर्ट बैक। हो सके उतना बॉडी ऑफ द लेटर 2, 3 या 4 लाइन में खत्म हो जाता है। आपको जो भी इन्फॉर्म करना है आप 2 से 3 से 4 लाइन में लिख के उसको खत्म कर सकते हैं। वेरेज जब हम फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर की बात करते हैं, वी शुड राइट इन पैराग्राफ्स। आपने अभी जस्ट लास्ट ईयर भी हिंदी में नंदिनी का पत्र और ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें समवन इज राइटिंग लेटर टू समवन एंड वो अपने टूर के बारे में बताते हैं। इवन हमने अभी जब ईवीएस किया था, राइट, तो ईवीएस में हमारे चैप्टर नंबर स्पिरिट्स ऑफ एडवेंचर में नेरुल जो है वो अपने फ्रेंड कपिल को लेटर लिखता है। सो दैट लेटर इज कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर एंड द लेटर विच आर रिटर्न टू द ऑफिशियल पर्सन्स आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर्स। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लास्ट, जब भी आप लेटर क्लोज करते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं योर अफेक्शनेटली, योर लविंगली, योर सैल्यूटेशंस हम हमारे प्यार से जो भी हम देना चाहते हैं, वी कैन राइट दैट योर अफेक्शनेटली, योर लविंगली, योर रिस्पेक्टफुली, यस। बट यहाँ पे जो यहाँ पे जो सैल्यूटेशंस आते हैं वो थैंक यू इज मस्ट, योर सिंसियरली एंड द नेम ऑफ द पर्सन who has written this letter. So yes, and now I'll tell you the marks distribution. For sender's name and address, 1.5 mark. For date, 1 mark. For receiver's address, 1.5 mark. For salutation, 1 mark. For subject, 1 mark. Body of the letter, 2 marks. Thank you, yours sincerely, that is complimentaries, that is 1 mark. And the name of the person is 1 mark. So this letter I take off 10 marks, and this is the marks distribution. Your today's homework is you will try to write this body of the letter. Complaining about gas leakage है तो आप कोई भी लिख सकते हो. You can write either you are complaining about your home leakage, or either there is some leakage in your area. ठीक है. So your today's homework is you will complete this letter in your notebook. So hope this is clear to you all. And with this I'll end this class. That's it for the day. Goodbye everyone. Bye.